And I'm a self-made man. That I when I look back in my life, I don't feel that the need to express my gratitude to any one individual. कि thank you very much. आपने मेरे को ये किया वो किया. I never acted, picked up projects, or did anything to cater to, especially to women. I never did that. I think I don't have any debts in my life, mental debts in my life. So that makes me a very free-spirited person, I think. Hello Rajeev, welcome to eTimes TV. How are you doing? I'm doing excellent, especially in these times when you actually get to go on a holiday, it gets even better. And I managed to actually take out some time and be here wherever I am right now. Talking about your characters so far, Rajeev, आपने कोशिश की है मतलब right from your first film, you have always tried कि आपके characters थोड़े different रहे, जो आप projects choose करें वो different रहे. But कभी आपको ऐसा लगता है कि I wish मैंने शायद बॉलीवुड में एक रोमांटिक या कमर्शियल फिल्म से अपनी बिगनिंग की होती, क्योंकि काफी बार जब हम डेब्यू कर रहे होते हैं, जब कोई एक्टर डेब्यू कर रहा होता है तो एक इमेज बन जाती है कि वो एक लव स्टोरी से, एक कमर्शियल बहुत बड़ी बजट फिल्म से करेगा. और उस टाइम पे तो आप बहुत अच्छा कर भी रहे थे, करियर वाइज भी, मतलब आप एक पीक पे थे अपने, और आपके पास आई एम श्योर बहुत सारे ऑफर्स आए हुए हैं. कभी आपको ऐसा लगा कि आई विश मैंने बॉलीवुड में एक बहुत ही कमर्शियल फिल्म से अपनी बिगनिंग की होती? देखिए क्या होता है कि अगर आप ये सोच के क्वेश्चन का जवाब मैं ऐसे देता हूँ आपको कि अगर मैं सोचता कभी ऐसा कि काश मैंने किया होता, तो उसका मतलब होता है कि मेरा मकसद कुछ और होता, कि मुझे ये यहाँ पहुंचना जी. मुझे अगर बार बार मौका मिला जाए तो मैं बार बार ऐसा कहूंगा कि मैं कभी रोमांटिक फिल्म के साथ में शुरुआत नहीं करता. द रीजन इज दैट इज द ओनली वे दैट पीपल थिंक ऑफ being part of the industry. The question says that कि हर आदमी ऐसा सोचता. Right. मैंने भी शायद ऐसा ही सोचा होगा. Even I had probably thought like this. जब मैं फिल्म करने से पहले सीरीज ओनली जब टीवी सीरीज की थी, जहाँ पर मुझे मेरे कैरेक्टर को बहुत जरा प्यार मिला, मेरे कैरेक्टर को बहुत जरा अटेंशन मिला, सब कुछ हुआ. एंड आई थिंक दैट वाज इट. मुझे लगा ये हो गया, अब क्या मैं इसके बाद आगे तो आई एम आंसरेबल टू माय सेल्फ. कैन आई डू दिस? And Amir was never a planned move. Amir तो just came on my way. मुझे पता था कि मैं क्या करूंगा अपने करियर में या आगे क्या करूंगा. Amir came. I took up Amir. जब मुझे मालूम था कि बहुत से लोग मना कर रहे थे Amir को कि नहीं यार हमें नहीं करना. I said how can you miss out this one? And it has been one of the best decisions of my life. The reason is it is not about कि मैं क्या फिल्में कर पाता. It's never been about 100 crore, 200 crore kind of thing. अगर ये सब करना होता मुझे, तो मैंने कोशिश की होती कि मैं भी ऐसी फिल्में करूं. मैं भी कोशिश करता कि मेरी पीआर मशीनरी रखूं साथ में, मैं अपना सोशल मीडिया का गेम अप करूं, मैं अपने आप को रोज. मैंने कभी किया ही नहीं, ना तब किया ना आज करता हूं. सो ऑब्वियसली दैट शुड रिफ्लेक्ट माय मेंटालिटी. अ लॉट ऑफ पीपल से कि अरे यार हम तो आपको वहां देखना चाहते थे, हम वहां देखना चाहते हैं. लेट्स से पुट इट दिस वे कि आप क्यों नहीं करते हो, आपके अंदर ये है, आपके अंदर वो है. And Rajeev, please don't waste your talent and all of that stuff. I keep hearing it now and then, not just from outsiders, but also from people from my industry. Rajeev, why? You're this and that. But I tell them, listen, आपकी लाइफ में आप जिस तरह से मुझे देखते हैं, मैं अपनी लाइफ को वैसा नहीं देखता हूँ. मुझे ऐसा ही करना है कि मैं कभी 6 महीने के लिए ग्रीस चले जाऊँ या छुट्टी पे चले जाऊँ, और मैं सोचूं ही नहीं कि मुझे मेरे बैक बॉम्बे में हो क्या रहा है, क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ. मैंने ये किया. All this while मैं इतना कम दिखा, इसीलिए कम दिखा because I never thought that work is my life. Even at the peak or not peak, मेरी दुनिया नहीं बनेगी कभी भी. And can I afford that? That's the only thing. आप afford कर सकते हो क्या? मैंने किया ना. देखिए आज मुझे तकरीबन 19-20 years हो गए हैं, मैंने आज तक किसी पीआर मशीनरी को हायर नहीं किया. बिल्कुल ना. तो मेरे कभी कोई कोशिश की कि मैं प्रमोट करूं अपने आप को. मैं फिल्म में भी तो मुझे बोला गया इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे. बट देन आई थिंक ऑर्गेनिकली इफ इट वर्क्स great. If I'm loved organically, I would be happier, not big because someone is pushing me. रोज मेरी फोटो अखबार में छप जाए कि मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैंने ये पहना, या मेरे ट्विटर या इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस को इतने लाइक्स मिले, और वो बार बार पुश किए जा रहे हैं मेरी पीआर कंपनी से, तो I wouldn't enjoy it. I want people to appreciate my work organically. मैं आपको पसंद हूँ and I want to feel deserving of it. So I have a different approach in life anyway. So I feel bad for people who actually feel bad for me sometimes कि यार ऐसा किया होता है. But nobody will. And it's also about longevity. आप कितना टाइम तक कर पाते हैं.
is Vijay happy to see me, after so many years also? Yeah, I He am. says, yeah, nice, interesting. I'm just saying that, yeah, you're interesting, Rajiv. आपका career भी interesting है, you're interesting. तो आप जब तक आप वो interest जगा सकें, I think that is how I want my career to be. It is not about the other way. But how have you managed to sail against the tide? Because इंडस्ट्री में एक मिथ है कि आपको सोशलाइज करते रहना चाहिए, अगर आपको काम चाहिए, आपको रोज दिखना जरूरी है, आउट ऑफ साइट हो गए तो आउट ऑफ माइंड हो गए. ये कॉन्फिडेंस एक राजीव जो आया है, डिस्पाइट बीइंग नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, हैविंग नो गॉडफादर, नो समवन पुशिंग यू ऑल द टाइम कि अरे चल ठीक है तेरी एक फ्लॉप हो गई, मैं तेरे लिए 2 फिल्में और बना दूंगा. ऐसा कोई नहीं, आपका बैकिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप सोशल मीडिया से दूर रहना प्रेफर किया, आप पार्टीज में नहीं दिखते, सोशलाइज करते हुए ज्यादा नहीं दिखते. हाउ हैव यू मैनेज टू स्टे कॉन्फिडेंट फॉर सो लॉन्ग? I think somewhere because I always believed it's a myth. Are you saying a myth है? So I have also believed that it's a myth, boss. Also, I never wanted to be a slave of any mindset. एक वो you end up being a slave of a mindset कि अरे यार ऐसा ही होता है. For some odd reason, मैंने जब पहला सीरीज अपनी छोड़ी थी, मैंने आई थिंक मेरे करियर में जो डिसीजन जो मैंने लिए थे बिना सोचे समझे, उन्हीं ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि बॉस ये सब बेवकूफी है, ये जो चलता है आपके अंदर अगर है तो आपके अंदर होगा, आप में नहीं है तो फिर नहीं होगा. सो आई थिंक जब पहला सीरीज मैंने छोड़ी थी, जब मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि भैया करियर खत्म हो जाएगा तेरा, तू बालाजी का सीरीज छोड़ रहा है, तू एकता का सीरीज छोड़ रहा है, तो इस साथ ये होगा, तू कुछ नहीं करेगा. एंड दैट इज व्हेन आई सेड कि यार अगर मुझे ऐसे ही अपनी जिंदगी जीनी है तो आई विल नेवर बी एबल टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ मोर देन एनीवन एज रिस्पेक्टिंग. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को 5 जने पूछें या 50 लोग पूछें मुझसे, डू आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, डू आई फील गुड व्हेन आई शट माई आईज, डू आई फील एवरीथिंग वाज अर्न्ड बाय मी, या ये मुझे परोस के दिया गया. डू आई फील दैट कि द हाउस दैट आई बिल्ट was it because 20 people helped me और इसने मुझे फेवर किया है, और I feel यार नहीं, every brick I think somewhere I earned with my own conviction, so I need to feel self deserving. मेरा लाइफ का गोल है कि everything happens for me organically, genuinely, and I need to respect myself. मैं कुछ भी करूं लाइफ में, I need to feel good about myself. तो I think ये कारण था जिसकी वजह से I feel नहीं चाहिए मेरे को 50,000 कितने बार आते हैं, मतलब जब से मैं I think जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड शुरू हुआ है, every now and then somebody will come and say that you know what, let's increase the following, बढ़ाते हैं आपकी, let's do this, सर हम आपका गेम अप करते हैं, आपको पैसे नहीं कमाने, आपको एक ट्वीट से ये पैसे मिलेंगे. So I can do that, and there are, I mean, even though I hardly have any presence on Twitter, I don't engage in social media, yet sometimes some people come with that offer of money and I say I don't need it. मतलब ये this was never my way of earning money. मतलब मेरा ये था नहीं कि मैं ऐसे कमाऊंगा, ये हो रहा है तो मतलब फिर तो मैं शादी में भी नाचने लग जाऊं, मतलब अगर मेरे को जमता तो. मुझे नहीं जमा वो. I'm not looking down upon anything, by the way. Yeah. I'm not being derogatory. All I'm saying is this is not how I wanted to earn money. So for me, of course I can do a lot of things, promote a lot of things, and earn money, but that was never my intent. वो पुश भी जब करते हैं, मैंने कहा नहीं खरीदने मेरे को यार तुम्हारे, आई एम वेरी हैप्पी, आई रादर बी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. मेरा बस चले तो मैं एक्चुअली डिलीट कर दूं अपने अकाउंट. बट देन इन टुडेज डे एंड एज यू नीड टू हैव अ प्लेटफॉर्म जहां से आप अपनी आवाज कह सकें. बिल्कुल, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम स्टिल देयर, अदरवाइज इट डजंट. बट कभी आपको रिस्की नहीं लगा राजीव, जब आप अपना उतना पॉपुलर शो भी छोड़ रहे थे, कभी आपको लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि आसपास के लोग ने बोला कि गलत डिसीजन है मत करिए, कभी आपको रिस्क नहीं लगा और कभी आपने बैठकर ये सोचा कि क्या ये मूव अगर गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा? ऑफ कोर्स रिस्क लगा, टेंशन भी हुई, डर भी लगा. ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल निडर था, लेकिन समवेयर दिमाग में ये भी था कि क्या बनना है, मीडियोकर माइंडसेट बनना है. ये जितना माइंडसेट जो लोग तेरे को एडवाइस दे रहे हैं, ये 10 में से 9 लोग दे रहे हैं. यू वांट टू बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ मीडियोकर माइंडसेट और यू वांट टू बी योरसेल्फ. सो एंड आई ऑलवेज सेड आई वांट टू बी माय सेल्फ. मुझे किसी से उधार नहीं लेना है, आपका ख्याल उधार नहीं लेना है मेरे को. एंड आई सेड व्हाई एम आई वांटिंग टू लीव दिस, देयर इज अ पर्पस, वो पर्पस है मेरा. एंड जब मैं हमेशा से कहता आया था, क्या मैं फ्लूक हूँ, एम आई अ फ्लूक, कि किसी ने मुझे दे दिया, मैं चल गया और मैं बन गया, और आई डिजर्व्ड ऑल दैट अटेंशन. वो जितने हजारों लाखों चिट्ठियां जो घर पे पड़ी हैं मेरे, या लिखते हैं लोग या लिखते थे
जब चिट्ठियों का जमाना था, or the gifts that I used to get, or people coming and putting their hands on my head, women, senior people, younger people, all those who would just look at me and just bless me. Do I deserve it? And I have to be deserving, boss, because ये सब नकली नहीं हो सकता. This cannot be for someone who doesn't deserve. So I think it all started from there, and I wanted to feel deserving. Yeah. But when you recall those moments, आपकी फर्स्ट डेब्यू शो के, वो जमाना ही अलग था. मतलब अभी भी हम टीवी कवर करते हैं, हमें पता है कि लोग 4 की टीआरपी पे खुश हो जाते हैं, और उस समय तो टीआरपी आती थी 14, 15, 16. यू नो, आपने भी चेंज होते हुए देखा है ट्रेंड, राजीव. एंड हमें पता है कि चैनल के ऑफिसेज में लेटर्स जाते थे, फोन बंद होना नहीं रुकता था जब पता चलता था कि उनका फेवरेट कैरेक्टर को मार रहे हैं ऑन स्क्रीन या वो छोड़ के जा रहा है. वो जमाना अगर आप एक्सप्लेन कर पाए, हाउ विल यू डिस्क्राइब? मुझे हमारे जमाने में ना कभी रमा नहीं, तो आई विल नॉट बी एबल टू से दैट कि वो जमाना था. आई थिंक दैट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. आज अलग जमाना है. आज आई थिंक सोशल मीडिया पे अपने आप को लोग यू नो, इट्स द सेम काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी फॉर देम व्हेन दे सी दैट कि मेरे 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं. एंड देन आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज़ आई से 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, हाउ मैन, मतलब 5 मिलियन, मतलब कल को तो आप कुछ भी कर सकते हैं. तो and they actually believe in that. So I think it just keeps changing. That was one time. It's a different time altogether. Of course, वो limited series थी, limited shows थे, avenues limited थे, social media नहीं था उस time पे, तो आपको पसंद किया जाता रहा. And yeah, those were good times. These are also good times. But it just keeps changing. Again, I'm saying, like some people, not just me, I'm saying sometimes some producers come and say कि हमने इसको cast किया क्योंकि 10 million followers. मैं कहूँगा 10 मिलियन तो आपके 10 मिलियन लोग तो कंफर्म हो गए ना, देखने आएंगे. बिल्कुल. एंड देन यू एंड अप पीपल हु हैव 50 मिलियन और 60 मिलियन फॉलोअर्स, एंड यू रियलाइज दैट कि उनकी फिल्म का बिजनेस इज लाइक ऑलमोस्ट एज गुड एज नथिंग. वो कहाँ गए फॉलोअर्स? सो आई डोंट बिलीव कि वो फॉलोअर्स जो दिखते नहीं है, आई समवन लाइक मी वुड नेवर बिलीव दैट anyway the word follower for me is also very derogatory. So it's a different world. But does that ever pinch you? क्योंकि आजकल बहुत ये होने लगा है कि एक पोर्टफोलियो सा बन गया सोशल मीडिया अकाउंट. अच्छा, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, अरे इसको हायर कर लो, इसको ये काम दे दो, हमारे कम से कम उतनी रीच पहुंचेगी. भले ही वो बिजनेस, वो जैसे आपने कहा बिजनेस वो ना करे, बट ये बहुत एक्टर्स के साथ होने लगा है कि सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे उनको काम मिल रहा है, टैलेंट के बेसिस पे नहीं. Nothing bothers me, Vijay. Trust me, I'm a very practical person. मैं तो सोचता ही नहीं. I just know about myself. I think about myself. I am focused. I'm a very selfish person, so it doesn't bother me कि मीडिया की कोई आके ऐसा बोलता है, मैं बोलता हूँ अच्छी बात है, ले जाइए. I believe जो मेरी किस्मत में है, जो मैं अर्न करूंगा वो मुझसे कोई लेके नहीं जाएगा. चाहे तुम्हारे 10 मिलियन फॉलोवर्स हो, चाहे 50 मिलियन फॉलोवर्स हो. I may have almost as good as nothing, but it doesn't matter to me. I mean, I don't even look in that direction. That's why it would bother me. तो मैंने शुरू हो गया था ना, मैं रोजाना कुछ डाल के कि आ जाओ, हैशटैग ये हैशटैग वो. I don't do it. I find it very lame because जिस दिन मैं करूंगा, I'm telling you this right now, मैं जिस दिन ये करूंगा उस दिन I will feel like a loser because this is not me. So I have never done it till now. I don't think I'll ever do it in the future. But what gives happiness to Rajeev? That I'm a self-made man. That when I look back in my life, I don't feel that the need to express my gratitude to any one individual कि thank you very much, आपने मेरे को ये किया वो किया. And I could touch people. What gives me happiness is that I could connect with people. What gives me happiness that I could do for some people. So I think I think I don't have any debts in my life, mental debts in my life. So that makes me a very free-spirited person, I think. And who's your biggest critic in your personal life? Obviously, your wife, your partner. She would be the not biggest. She was the most honest critic. She appreciates when she thinks I've done a decent job, and she appreciates when she knows that okay nahi yaar, pata nahi yaar, or a project turns out to be nicer or a project doesn't turn out to be nicer. So she will give you an honest opinion. I wouldn't say biggest because biggest means आप criticize करने के लिए बैठे हो, but she's an honest critic, and I generally go to her for if I ever look for any opinion. Mostly तो मैं opinion लेता ही नहीं हूँ किसी का. But if I have to take someone's opinion, then it's Manjari. सबसे हार्श कोई क्रिटिसिज्म उन्होंने आपको दिया होगा जब आप भी शॉक्ड हो गए थोड़ा कि आपने उस तरीके से प्रोजेक्ट को देखा नहीं था? कुछ याद है आपको?
नहीं, मुझे खुद को मालूम होता, मुझे खुद को एग्जैक्टली मालूम होता है कि मेरा प्रोजेक्ट क्या सोच के हम घुसे थे और क्या बन के निकला, बिकॉज हर चीज तो आप कंट्रोल कर सकते नहीं ना. समटाइम्स यू जस्ट गेट इनटू अ प्रोजेक्ट एंड देन यू रियलाइज दैट ये बना के भेजा, आप तो एक्टर, आप इतना काम इतना कर सकते हो, उतना ही करते हो. बट या समटाइम्स अबाउट योर लुक, sometimes she'll say, or about when you talk on a certain platform or whatever, sometimes she would say that she would point out the things that you feel कि यार ऐसा तो नहीं था, ना ही मैं ऐसा लग रहा था, तुझे लग रहा है ऐसा. So mostly she would criticize about how I presented myself or how I look, or if I was, sometimes she feel I'm just too candid, you know, I just don't filter when I speak. So I think but I don't remember any such criticism which kind of shook me. यार ये तो मैंने सोचा था कि बहुत कमाल का लगेगा तेरे को और तुझे नहीं लगा. I think I'm सबसे, to answer your question, the biggest critic is me of my own work. I don't watch my own things. I never, because each time I watch my past के projects, I feel कि ये चल कैसे गया. You know, I can do it so much better today. So I think I am the biggest critic. She is the most honest. And how does she handle your female fan following? She's okay? She doesn't care. She doesn't care. She doesn't care at all. मतलब first time when I was dating her, उस दिन मुझे मालूम है कि हम लोग घर पे मेरे she and her sister were supposed to come to my house. It was my birthday. और मैं घर पे गया तो नीचे there were 5-6 girls waiting with a cake, and I had just started dating her. अभी मैं मिला ही था, मुझे लगता है 7-8 या 9 दिन हुए होंगे. और वो लड़कियां मेरे घर के नीचे 5-6 खड़ी थी, and I said, and one of them I kind of knew her also. मतलब not, I just knew that okay fine, she's somebody who writes to me. Yeah. And she came and she said, okay, you enjoy भैया, मैं जाती हूँ. Sorry, you have people, you have guests at home. I said, no, I don't know कहाँ से आई है ये, I don't even know. But they were there, and so she's a very secure girl that way. The female following has never been a. Actually, मैंने भी इस चीज को कभी इतनी तवज्जो नहीं दी, female following या fan following को. तो शायद उसने भी कभी नहीं दी. I never acted, picked up projects, or did anything to cater to, especially to women. I never did that. If I was to do that, I would have picked up some nice romantic characters and maybe tried to look good and put up my picture. I don't think I've ever catered to them, because I think, as I just said, that organically, if you get affection from anyone, it's the best. मैंने अभी कहीं और सुना भी राजीव, दैट पर्सनली भी आप एक हैं फीमेल, उनके एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं. इज दैट ट्रू? I don't want to sound like कि मैं बहुत ही कमाल का इंसान हूँ. मैंने सिर्फ एक लड़की है, स्वाति, जिसकी मैंने लाइफ में उसको helped her, and not very big, by the way. I keep telling the world that it just sounds very big that I sponsored a girl child. Sponsoring is nothing. So when you make some money, even if you give 2% of it or 1% of it, I have seen it, because I feel so good that आज वो बड़ी हो गई है, she's going to college and all that stuff. So I just did that. But I do feel that charity is not about how certain people do it. I think if you can help 20 people around you, or how many ever people around you जो आपकी लाइफ में है, उनकी जिंदगी संवार दो, वो जनरेशन बदल दो. I think that is the biggest charity, instead of saying कि मैंने इस फंड में इतने डाल दिए and then you put it up on your social media account. I think I believe in this, that if I can make lives better of people around me, I would feel nice. Yeah. Lastly, before wrapping up, Rajeev, जब आपने अपना डेब्यू शो छोड़ा था, पॉपुलैरिटी छोड़ी थी, उस समय बहुत रिपोर्ट्स आई थी ऑफ राइवलरी बिटवीन यू, एकता, और हमें पता है कि बॉलीवुड में कैसे कैंप्स हैं जहाँ पे अगर आप वो कैंप्स के साथ अच्छे हैं तो आपको बहुत प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. उस समय क्या वो शो छोड़ना कभी आपके करियर के आड़े आया, या कभी एकता की तरफ से कोई प्रेशर आया? जो रिपोर्ट्स आती थी उसके बेसिस पे मैं आपसे पूछ रही हूँ. No, I think Ekta will. She's such a secure person. What I know of her, I don't think that she is a woman who would go after somebody कि मैं बर्बाद कर दूंगी इस करियर को. कभी नहीं हुआ ऐसा. Of course, we had difference of opinion on many occasions. Not just जब मैंने पहला शो छोड़ा, उसके बाद I did collaborated once again with her on for her platform. We had differences of opinion again. So we are two people who have very strong opinions, I guess. And creative people. Yeah. तो कभी ऐसा पंगा नहीं हुआ. I think
if you ask her, I'm sure she has to love me. There is no other way out. So, but if we don't work with each other, or she doesn't work with me and I don't choose not to work with her, then maybe वो project हमें समझ में नहीं आया होगा. You know, उस time पे आपके creative differences हो जाते हैं. But I don't think that she's a person who would be vengeful because किसी ने उसका show छोड़ा. I don't think she'll even bother because she's sure she's a very, very secure woman. Yeah. Thank you so much, Rajeev, for taking out time and chatting with us. All the best for the show. और मैं उम्मीद करती हूँ हर प्रोजेक्ट जैसे फैंस को पसंद आता है, लोगों को पसंद आता है, ये भी उतना ही कमाल कर. This one I'm really hoping because this is something very, very different. So I just hope that people like it. Yeah. Thank you so much, Rajeev. Take care.